Hello students, today we'll discuss the transaction of income and expenditures. Let's start with the golden rules of the debit or credit. We know very well, or we discussed the golden rules of debit and credit. So mainly there are two parts, that's personal and impersonal. In personal accounts, we know very well debit the receiver and credit the giver. Or in personal account, there are two types of accounts are there. The one is real and the second is nominal. So in real accounts, we discuss the goods, assets or investments are considered in real, and as per the real account, debit what comes in and credit what goes out. And today we will going to discuss the nominal account. And we know very well the rules of nominal accounts is debit the expense and losses, expense and loss, and credit the income and gain. And it's a very simple, बहुत ही simple है. Maximum transactions occurs for the expenses, income, profit, loss in business. So this one is also the important. Now we'll see the one by one transactions and discuss the its general entry. Now see the sum number 11. You have a textbook, so page number 104 and sum number 11, transaction of revenue expenses. Okay, तो transaction of revenue and expense. Revenue that means income and expense. तो revenue and expense के transactions हम आज consider कर रहे हैं. See the first one is the following transactions of May 2014. Write the general entry in the books of Shashank. Okay, so first we will prepare the general. यहाँ से erase कर लेता हूँ. चलो जनरल prepare कर लेते हैं सबसे पहले. तो एग्जैक्ट मीटर में इजी होगा. General entries in the book of session. Now see the first one, 2014 May 1st. So date 2014 May 1st. Particular LF debit or credit. The first transaction, paid rupees 500 for refreshment and inaugurations of shop. Paid rupees 500 for refreshment and inauguration of shop. When जब भी मीन्स हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका इनोग्रेशन करेंगे. तो लॉजिक सिंपल है कि जो भी इनोग्रेशन हो रहा है, जब भी हमने कोई इनोग्रेशन किया है और उस पर जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो इट्स कंसीडर एज अ सन्ड्री एक्सपेंसेस, टी, स्नैक्स एक्सेट्रा जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट्स सन्ड्री एक्सपेंसेस. तो सी पेड 500 एंड व्हेन वी पेड 500 रुपीस जब हम पे कर रहे हैं तो कैश कम्स और कैश गोज आउट. तो दैट्स अ वेरी सिंपल. व्हेन वी पेड द अमाउंट कैश गोज आउट. कैश क्या हो रही है? कैश गोज आउट. तो वन इज द रियल अकाउंट हो गया कैश, और उसे इजीली अब हम कर सकते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो हियर द कैश गोज आउट, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट क्रेडिट. क्लियर? The second being the expenses paid for the inaugurations, refreshment at the inaugurational function. Inauguration function के refreshment में हमने चाय पानी नाश्ता एक्सेट्रा जो भी है, we paid for that, so it is considered as a sundry expense of the business. So the as per the nominal accounts we know very well debit the expenses
sundry expense account debited, sundry expense account debited to cash goes out to cash account. Now see the second one. See the second transaction. Purchase necessary books of account. Purchase necessary books of account ₹400 for business. तो हमने बिजनेस के पर्पज के लिए 400 रुपीज की बुक्स परचेज की, जैसे कि हमको अकाउंट्स रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए और जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए तुमने तो जो बुक्स परचेज की है, लेजर बुक होती है, जनरल बुक्स होती है, सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करने के लिए सभी जो बुक्स हम ले रहे हैं, तो ये सभी बुक्स दैट इज कॉल्ड अ स्टेशनरी, वो हमारे लिए किसमें कंसीडर करेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी. सो वी पे व्हाट हाउ मच अमाउंट 400 फॉर द बिजनेस, परचेज्ड नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ₹400 फॉर बिजनेस. तो 400 हमने पेमेंट किया और हमने बुक्स परचेज कर ली. तो सिंपल है, कैश गोज आउट, कैश जा रही है. तुमने मार्केट में से यू ऑल्सो परचेज लॉट्स ऑफ थिंग इन मार्केट, हमने मार्केट में से बहुत सारी आइटम्स परचेज की है. मैं अच्छे से बताया कि जब भी हम परचेज कर रहे हैं तो कैश गोज आउट, और प्रोडक्ट जो भी तुमने परचेज किए, द प्रोडक्ट परचेज बाय अस कम्स टू अस, वो हमारे पास आ रहे हैं. सो हियर द स्टेशनरी एक्सपेंस पेड 400, सो इट्स कंसीडर एज, सॉरी यहाँ पे अमाउंट बाकी है, दैट अमाउंट इज 500 रुपीस, इट्स 500 रुपीस. सो सेकंड वन इज okay. Now see the second one is paid stationery expense. So stationery expense account debited to cash comes or cash goes out, cash goes out, so cash account. लाइव रिकॉर्डिंग में कॉल आ जाते हैं, सो मैंने फ्लाइट मोड कर लिया है, नो प्रॉब्लम. नाउ सी द थर्ड वन, paid ₹200 for the wages and 100 for the carriage. 200 rupees for wages paid. तो फॉर एग्जांपल के मैंने पैसे निकाले, ये 200 रुपीज ये वेजेस के पेमेंट किए, ये 100 रुपीज ये मैंने कैरेज के लिए पे किए. तो इन बोथ केसेस कैश गोज आउट, कैश जा रही है, बोथ आर द एक्सपेंस. सो वी नो वेरी वेल द एक्सपेंस अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश गोज क्रेडिट. वी मेक द सेपरेट एंट्री or we can make the combined entry, but the same day transactions is there, so we can easy for us to make the combined entry, and the date is the 3rd May. Then 3rd of May, second and third one is. Now see the one is wages account, so wages account debited, and then carriage is, so carriage account debited and to cash goes out, so cash account credited. The amount is 200 rupees, 100 rupees, and total cash goes out 300 rupees. That's very simple, बहुत easy है ये transactions. Now see number 4 means 5th May, paid ₹500 for the shop rent and 300 for house rent. That's very simple. House rent it is the personal expense and shop rent is a business expense. So any personal expense paid from the business, it is considered as a drawing. So the personal yani house rent is our personal expense, so it is considered as a drawing, and the shop rent is the expense of rent considered, so it's a rent account debited, that's a rent expense. So rent account debited and drawing account debited to cash goes out. So the amount of rent is 500, yes, or the house rent is 300, 500, 300, or the total amount is 800. Now the next one is ₹400 received for commission. The 400 received, that means cash comes in, cash आ रहा है इस बार. Now that's income, ये हमारी income है, cash comes in, received 400 rupees for commission, that means we have been some
and for that we are getting the commission of rupees 400 rupees. So the cash comes in, we received cash, that shows the cash comes in, cash आ रही है, so cash account is debited and commission is the income. So as per the rules of nominal, debit the expense and loss or credit the income. Here the commission is the income, that's why commission account is credited and cash comes in, so cash account debited to commission account to. Okay, now 6th, 10th, 12th. See the next commission, the amount of commission is 400 rupees received as a commission, so 400 rupees. Now the next one, a check of rupees 800 received for brokerage. हमने मीन्स यानी कि कोई डीलिंग करवाई और उसकी ब्रोकरेज हमें 800 रुपीज, अ चेक ऑफ रुपीज 800 रिसीव्ड फॉर ब्रोकरेज. ब्रोकरेज के लिए मीन्स सो एंड सो पार्टी ने हमें 800 रुपीज का चेक दिया है. सो कंसीडर दैट द चेक हमने वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट 2 3 4 5 ट्रांजेक्शंस में हमने चेक किया है कि चेक इज नॉट डिपॉजिटेड, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है. अगेन एक चीज अच्छे से समझ लो कि व्हेन वी रिसीव्ड द चेक for general entry, when we received the check and if after 2 3 4 5 days or 3 4 transactions, if the instruction is given the check is deposited, then we consider that the cash is received. But there is no transactions like that, then the check received is deposited in a bank. We consider that the check received is deposited in bank. Now so our bank balance is increased. And second thing, we received for brokerage, so the brokerage is the income, so bank account debited to brokerage account. The amount is 800. Now next one, next 15, paid advertisement bill of Gujarat Samachar rupees 300. Gujarat Samachar means give an ad in Gujarat Samachar, we give an ad in Gujarat Samachar and the expense of rupees 300, the charge of the advertisement is 300 rupees, so we paid this charge to the Gujarat Samachar and that is we paid, that means cash goes out, simple, so cash account is credited and we give the advertisement is newspaper for the advertisement. Please consider the advertisement expense of the business, so under the head advertisement expense we consider this expense, so advertisement account debited to cash goes, then cash account credit. 300 rupees is advertisement. Now the next one is received equity share dividend rupees 500. For example, we purchased share of so and so company, हमने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं and at the end of accounting year company declared some dividend and paid to their equity shareholders. The same way we get the dividend, we received dividend of 500 rupees, we received equity share dividend 500 rupees, or in normal case the dividend is paid in check or directly deposited in your account. That's why keep in mind, if you write down cash account is okay, but here you have to write the bank account, that's bank balance is increased, so bank account is debited, and what happened here, the dividend received, and dividend is our income, so to dividend account, then the amount of dividend is 500 rupees, the amount of dividend is 500 rupees.
That's clear. And then the second last 24, SR company has paid डिबेंचर इंटरेस्ट बाय चेक. SR कंपनी ने डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया है, तो क्लियर होना चाहिए. वी परचेज द डिबेंचर ऑफ SR कंपनी एंड SR कंपनी पेड टू अस. SR कंपनी हमें पेमेंट कर रही है, सो द डिबेंचर इज द इनकम फॉर द फर्म. हमारी फर्म के लिए इनकम है, बट एक्सपेंस फॉर द SR कंपनी. बट वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ शशांक. So at the viewpoint of Shashank, the interest received by Shashank and its income for Shashank and the interest paid by the SR company. So cash comes in, cash or bank account comes in. So cash or bank account, normally interest is also paid in through bank. So bank account is debited to interest account. Interest on debenture account. So the amount of interest is 1000 rupees. So 1000 rupees cash or bank balance increase or interest is our income. Now the next one, rupees 3000 paid for signboard of the business. So business का signboard हम बना रहे हैं, तो किसी को means any that is the one time advertisement ही है हमारी. business की signboard हम prepare कर रहे हैं. क्यों signboard बना रहे हैं? क्योंकि सभी को means पता चले और दी नेम प्लेट है पर्टिकुलर पर्सन. हम कई बार वो मेंशन कर देते हैं कि सो एंड सो शॉप में चले जाओ. सो जो नेम यानी कि वो नेम प्लेट ही है वन टाइप ऑफ. और जो साइन बोर्ड्स है सो वो हम कंसीडर करेंगे एंड इट्स कंसीडर्स इन फर्नीचर. सो फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड. दैट्स आवर असेट्स. टू कैश पेड, कैश अकाउंट और दी paid for the signboard itself 3000 rupees. Next one, okay. So this is the transaction of revenue and expenses. यानी कि income and expenses. That's very simple. बहुत typical है नहीं. So do the maximum practice of revenue transactions. और you have any doubts? बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, किसी को कुछ भी डाउट हो तो you can call, you can have any problems. सो यार हम ये यहीं पे कंप्लीट करते हैं और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक टाइप्स के ट्रांजैक्शन देखेंगे. मीन्स मैं दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस सेपरेट ट्रांजैक्शंस, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो. विल टेक वन एग्जांपल ऑफ द ऑल ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो थैंक यू वेरी मच.